Yes, good morning. Excuse me, sir. Yes, Sir, we have to start construction. Now, sir, we have to do third from the third question. we are doing construction and we have to start from the third question. Third question and fourth question I gave you in homework. Third and Sir, fourth. I understand the that two questions. You have done two questions, na? Sir, I don't understand third and fourth question. You have not understood third and fourth. अच्छा, कोई बात नहीं. I will tell. Don't worry. Tell me the page number. Sir, the page number is. Sir, 1 minute. Sir, the page number is 207. 207. Yes. We are doing the chapter constructions and we have already done the first two questions of the chapter, exercise 17B. And I gave you the third and fourth in homework. And Naitik is saying that he has not understood question number 3. कोई बात नहीं. Okay. So question 3 is saying that construct an equilateral triangle, each of whose sides measure 6.2 centimeter. Beta, in this question, you don't have to do anything. You just have to make a triangle where all the three sides are 6.2 centimeters. All the sides are equal. ठीक है. तो जैसे आपने पीछे के क्वेश्चंस करे थे वहां पर आपने डिफरेंट साइज ली थी. यहाँ पर यू हैव टू टेक ओनली वन साइड 6.2 centimeters. All the sides will be 6.2. So take an arc of 6.2 in your compass and make the arc from both the end points of the base, and you will get the triangle. Okay. So this is what you have to do in question number 3. Sir, in question number 3, sir, we have to take the 6.2 arcs, sir, three sides as we done in 1 and 2 question. Sir, Yes. the second part, measure each of its triangles, sir. We have to do this. Now if you want, you can measure. The angles will be 60 degrees. All the angles will be 60 degrees if you measure them. आप कर सकते हैं, but it is not required. You just construct the triangle. Okay. Sir, if we have to measure, so we, sir, measure with the protector. हाँ, you have to measure with the protector. If you have to measure. Okay, sir. Okay, sir, and fourth question. And in same question 4 also, all the three sides are given. AB is given and AC is given. Both are 4.8. And the side BC is given 5.3. So all the three sides are given. Same concept you will use to construct a triangle. बस और कुछ नहीं करना. And आगे का जो ये कह रहे हैं measure angle B, angle C, you can measure it if you want. You can measure it. Okay. Or Okay, draw. sir, and draw. That you Yes, don't sir. have to. Don't draw the perpendicular. Okay. Okay, sir. Don't we have to draw? Yeah. Yes. Okay, So sir. now we will be Thank. starting with question number 5 of exercise 17B. Sir, yesterday I give. Sir, yesterday I have given one message on your personal number. Yes. Tell me. Sir, I we have, have to. I Sir, have, we have to measure. Sir, we have to measure the that compass with and pencil on centimeter or on full scale number. sorry, or on? Sir, we have to put the compass or that pencil on centimeter or on 1 centimeter. But I'm not able to get what you are asking. Either you show me what you are trying to ask in this. You show me your screen and ask. Okay, sir, I am showing. Yes, sir, I am showing. Matar Manir, how are you? Fine, sir. Very good. Have you done the work? Question 1 and 2, have you done them in the copy? Sir, 1 and 2 done, but not 3 and 4. Okay. Try to do them today.
Akshat, Chandra, have you done? अच्छे बेटा, गर्दन तुम्हारी हिल रही है. Excuse me, sir. Yes. Sir, this is the scale. Wait. Now. And sir, we have to put the compass no on this centimeter or on 1 centimeter to find the measure of like 5 centimeters. It is not visible, beta. Just first you put your scale at somewhere. Now you show me where. Sir, You keep your compass at 0, the needle of the compass at 0, and okay, then sir. you measure suppose if you have to measure 5 centimeter. So the needle Okay, of the sir. compass will be kept at 0 and the pencil will be taken to 5. Pencil को हम 5 तक ले जाएंगे. Okay. Like Okay, sir. this you have to measure. Understood? Okay, sir. Okay. Yes, sir. And what about Shubham Singh? बेटा कर रहे हो कॉपी में कुछ? कॉपी बनाई है इस साल शुभम? Yes, Shubham Singh, are you doing the work in the copy? Anvi beta, have you done it? Yes, sir. Very good. शुभम सिंह, बता दो बेटा, बता दो. नाराज हो क्या मेरे से? Dhruv Bhojwani, have you done the work? Yes, अच्छा, sir, but my copy is lost. अरे कॉपी इज लॉस्ट. अरे घर पे भी कॉपी खो जाती है. स्कूल में तो चलो खो गए, ठीक है, मान सकते हैं. घर पे भी खो जाती है. चलो कोई बात नहीं बेटा. हाँ, अरे एंड व्हाट अबाउट अक्षत राज? डन अक्षत? चलिए, let's start with question number 5. We have to start with question number 5. Here, it is a little different from the first 4 questions. We have to construct triangle ABC where angle A is given. Angle is given this time 60 degrees. Side AB is given. Sorry. The side AB is given. How much? 3.8 centimeters. The side AC is also given. It is 5 centimeters. Okay. We have to construct this triangle where these 3 things are given. Angle is 60 and AB is equal to 3.8 and the side AC is equal to 5 centimeters. So for this, I will show you a video first. With the help of the video, you can get an idea that how to construct a triangle where 2 sides and 1 angle is given. Okay, so I will show you the video, just a minute. A triangle. Yes, this is the video. One of which must be a side to construction to, that is, 3 side. One of discuss some of the to construct a side angle side. This is the case. Case 1. SAS. Side angle side. Side angle side means 2 sides and 1 angle is given.
and the angle which is given is between the two sides. Included angle is there. So this is the same case which I am showing you in the video. The question number 5 is of the same type. Just see that, understand the method what they are showing in the video. You don't have to take the same dimensions. The dimensions are given in your book. Those are dimensions you have to take, but the concept only you have to understand from here. Okay. Triangle construction. To construct a triangle, when two sides and the included angles are given. Let us understand this by taking an example. Let us construct a triangle ABC in which AB is equal to 3 centimeter. So you can see the given information. AB side is given, angle B is given, and the side BC is given 4 centimeters. Okay. So 3 things are given. In 3 में से आपको दिख रहा है कि 2 are sides and 1 is angle. Okay. The angle is between the given sides. So it is the included angle. That means SAS criteria is there. SAS type is there. So let's see how to do it. Angle B is equal to 60 degree and BC is equal to 4 centimeter. We take the following steps. Step 1. Draw BC is equal to 4 centimeter. Step 2. First, you draw any of the 2 sides which are given. Any of the 2 sides you can draw. Unki length construct kar lenge with the help of a scale. Then you, then whichever angle is given. In this case, they have given angle B. So you will construct the angle. At B, draw a ray BD. So how to construct a 60-degree angle, that also you have done in your class 6. Angle construct karna aapne seekha hua hai. Okay. So you have to construct a 60-degree angle. Yes, here. sir. In your question also, you have to construct 60-degree angle. So let's see how to do it. Making an angle of 60 degree. So first you keep your compass at B and make an arc like this. Ye wali jo arc hai, this arc. Okay. So make an arc like this, and then you take your compass without changing the radius now. जो आपने पहले radius लिया था वही radius रखेंगे. Don't change the radius. Keep your compass at this point. Okay. Now, Sir, what is the radius? कुछ भी ले सकते हैं. You take it somewhere near 1 or 1.5. 1 या 1.5 के आसपास कुछ भी ले सकते हो. ठीक है. So take any radius. Okay. Then first keep it at B and then you draw this arc. Then you keep your compass at this point. ये वाला जो point आपको मिला इस पे रखिए. And then you make an arc like this. So you can see that the 2 arcs will intersect each other at this point. इस वाले point पे intersect करेंगे. Then you pick up your scale. Scale को रखेंगे and you will join B and this point and construct a line. Okay. B से इस point से pass होता हुआ एक line draw कर लेंगे. Okay. Understood how to construct 60-degree angle? किसी को doubt है इसमें बताइए. बहुत easy काम है. Sir, how to draw a 60-degree angle? Sir, I don't. ये तो बता रहा हूँ बेटा. सुनो तो ध्यान से. You keep your compass at B and make an arc. Okay. कोई भी radius. Okay, sir. एक arc बना लेंगे. Then you keep your compass at this point. देखो यहाँ पर रखेंगे compass को. दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Then you keep your compass at this point and make an arc like this. छोटा सा एक arc बना लेंगे. तो ये दोनों arc जहाँ पर cut करेंगे एक दूसरे को, this point of intersection, इसको बोलते हैं point of intersection. Okay? Yes, sir. Yes, sir. From this point and B, इन दोनों point से pass होती हुई एक line draw कर लेंगे with the help of scale. Okay? Draw कर लेंगे. देखिए बना दी इन्होंने. With BC. बना ली. Now after doing this, now what is the length of the other side? दूसरी side की जो भी length आपको दी होगी उसको कट कर लेंगे इसमें से. कैसे कट कर लेंगे? मेजर कर लेंगे. देखिए B पर रखेंगे कंपास को एंड जो भी लेंथ है उस उतना इसमें कट कर लेंगे. देखिए कैसे. Step 3. With B as center. So their other side is 3 centimeter. जो दूसरी वाली साइड है इनकी वो कितनी, उसकी लेंथ कितनी है? 3 सेंटीमीटर है.
So now they have measured 3 centimeters and they will keep their compass at B again. फिर से B point पर रखेंगे and यहाँ पर एक arc कट कर देंगे, 3 centimeter की distance पे कट हो जाएगा. जो point आएगा that will be point A and then they will complete the triangle. देखो. And radius 3 centimeter. Draw an arc cutting BD. देखा आपने कैसे आर्क को कट किया, B पर रखा कंपास को एंड एक आर्क ऐसे कट कर दिया. So this point will be A and then you join AC. ठीक है? At A. Step 4. Join AC. Then yeah, this is your required triangle ABC. Complete हो गया. ठीक है? So the same concept you have to use in the question which is given in your book. ABC Sir, it is a triangle. हाँ जी. Sir, it is compulsory to draw the this D line. हाँ, ये लाइन तो बनानी है. If you want to mark this point as D or not, that is your choice. लेकिन but you have to obviously construct this line. ये लाइन तो बनानी है. Okay. Okay. Start doing it, all of you. And show it to me after constructing it. You can show your video. Okay. कर लिया भाई, अक्षर चंद्रा ने तो कर लिया. बहुत अच्छे बेटा. वेरी गुड. दिखाओ बेटा, दूर से दिखाओ थोड़ा. कॉपी को थोड़ा दूर करो. और पास कर दिया तुमने. दिख नहीं रहा यार, थोड़ा ब्लर सा है. Are you using a laptop, Akshar Chandra? Laptop. Camera is not that clear. Show me again. यार दिख नहीं रहा है, ब्लर सा हो रहा है. But you have not marked the points. कौन सा point A, B, C, कौन से points है, mark them and then show. This is क्या है ये? This is A. What is this? I'm not able to understand. अरे नहीं बेटा, आपने एंगल A60 का बनाया है और यहाँ पर आई थिंक आपने एंगल B लिख दिया है. What is एंगल A? एंगल A60 का है ना, तो इधर आपने 60 डिग्री किसको मार्क करा है, A को या B को? हाँ जी. others who is showing it to me now. चलिए बेटा, जो वर्टिसेस हैं उनको ध्यान से देख करके जो भी पॉइंट आपने जितना मेजर करके लगाया उसको उस हिसाब से मार्क करिए. ओके. जो वीडियो में देखा उसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना है, आपने जो क्वेश्चन करा उसके अकॉर्डिंग लगाना है. ओके. हाँ जी. एनीवन एल्स? Naitik, have you done it? Sir, I am doing it. Okay. Akshat Raj, Dhruv Bhojwani, Prasoon, can you show your notebook? Adya Gupta, show me your notebook. You must have done it.
Sir, after drawing the arc of 60 degrees, sir, now what we have to do? अक्षत, आपने जो पहले लाइन ड्रॉ करी है एंगल ए, यू हैव टेकन 60 डिग्री बनाया आपने एंगल ए, तो वो ए पॉइंट हो गया। और उसके साथ में जो लाइन आपने ड्रॉ करी थी ए बी लाइन बनाई थी, कितने सेंटीमीटर की बनाई है ए बी? इट इज 3.8 सेंटीमीटर बनाई है, 3.8 ए बी। Excuse me, sir. 3.8 है, तो जो सेकंड वाला पॉइंट है उस लाइन पर दैट विल बी बी, और जो ऊपर पॉइंट आएगा दैट विल बी सी। अंडरस्टूड? Excuse me, sir. Yes, nothing. Sir, after drawing the arc of 60 degree, sir, now what we have to do? बना लिया आपने 60 डिग्री। नाउ यू ड्रॉ द एंगल, लाइन ड्रॉ करो। Sir, from the A points. Look at this. Look at this. First you draw a line AB. Yes, sir. मैं दिखा रहा हूँ AB कितना 3.8 सेंटीमीटर। ओके Sir, AC it is. AB AC को भी बना लो, 3.8 है AB। अगर आपने Okay, AC को नीचे बनाया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं। if you want you can take AB as the base or you can take AC also as the base. Okay, sir. It is your choice. अगर आपने ये 5 सेंटीमीटर की बनाई है तो ये B की जगह C बनाएंगे आप फिर। ओके, if you have drawn Yes, this sir. 5 सेंटीमीटर तो ये B नहीं लिखेंगे, फिर C लिखेंगे। ओके, तो वो because it is AC. Now you construct angle A 60 degrees. A पर कंपास को रखेंगे, एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर देंगे। Then you keep your compass at this point without changing the radius. Without changing the radius of the compass, you make another arc here. Now you can see the two arcs are intersecting at this point. दोनों इधर intersect कर रहे हैं। When you join this point and this point with the help of a scale, you will get a line like this. ऐसा करके एक लाइन आपको मिल जाएगी। मिल गई? Now this is. we have to take radius 3.8. रेडियस 3.8 नहीं लेना है कंपास का बेटा, पहले तो आपको छोटा सा रेडियस लेके एक आर्क बनाना है 1 और 1.5 सेंटीमीटर के आसपास टू कंस्ट्रक्ट द एंगल। एंगल को कंस्ट्रक्ट जब हम करते हैं तो छोटा सा आर्क लेते हैं, नियरली 1.5 के आसपास, उससे भी थोड़ा छोटा। ठीक है, उसको मेजर करने की जरूरत नहीं है आपको, ऐसे ही अंदाजे से लगा लेते हैं। ठीक है, सो यू मेक एन एंगल 60 डिग्री, ये आपको लाइन मिल गया। Now what is the length of AC? 5 सेंटीमीटर। अब आप कंपास में कितना ले लेंगे? 5 सेंटीमीटर ले लेंगे कंपास में। 5 सेंटीमीटर ले लिया। Now you keep your compass at A again. A पर रखेंगे and 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक आर्क ऐसे करके कट कर लेंगे। So in this point A पर रख के कट करा है, कितना? 5 सेंटीमीटर। ये लिख दिया मैंने 5 सेंटीमीटर। So this point, this will be C. ये आपको C मिल जाएगा because AC की लेंथ कितनी है? 5। Okay. So now you join BC, you will get the triangle something like this. ऐसा कुछ triangle आपको मिल जाएगा। Clear or not? जल्दी बताइए। Clear? Yes, sir. Very good. Others कुछ नहीं बोलेंगे बेटा, आज कुछ वो खा रहे हो, मुंह में कुछ भरा हुआ है आप लोगों ने जो बोलना नहीं चाह रहे हैं, या फिर मौन व्रत है आज आप लोगों का? फ्राइडे को मौन व्रत रखते हैं। अक्षर चंद्रा को हंसी आ रही है। बेटा ऐसे मीटिंग में बैठने का क्या फायदा? इफ यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, यू आर नॉट डूइंग द वर्क, बता भी नहीं रहे हो कि सर हो गया नहीं हुआ। हाँ जी नैतिक, डन, कंप्लीटेड। Yes, sir. I am. Sir, one line is left me. ओके
Sir, I have drawn the 3.8 centimeter line. Sir, after that, I have to put the arc of till which centimeter? Where? Sir, I have put this the You arc. have drawn AB as the base और AC as the base. किसको आपने base लिया? AB और Sir, AC? AC. Sir, AC. AC को base लिया है. Then you must have drawn from point A. आपने 3.8 centimeter का arc cut कर दिया होगा. Am I right or not? कराया आपने 3.8 A से. Sir, I have drawn the. Sir, I have drawn the 3.8 centimeter. Now I have to take the arc. आपने बेस AC बनाया, कितना बनाया ये बताओ पहले. बेस कितना बनाया आपने? Sir, 5 centimeter. 5 centimeter AC बनाया, ठीक है. Then Yes, you sir. have you made the angle 60 degree बना लिया आपने? Yes, sir. 60 degree बना लिया. फिर आपने यहाँ पर आर्क कट कर दिया. 3.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर आर्क कट करिए. अगर नहीं करा तो कट करो. 3.8 यहाँ से A से कट करिए 3.8 पर. Sir, 1 minute. Yes. 3.8. Sir, I have made the arc. Sir, I have made the arc of 3.8. वेरी गुड बेटा. आर्क बना लिया. देन यू जिस पॉइंट पे कट कराया आर्क ने इस लाइन को, उस पॉइंट से आप इधर ज्वाइन कर दीजिए. BC आपकी बन जाएगी. ये C है आपका, B मिल गया आपको. BC को ज्वाइन कर दीजिए. ओके. Okay, sir. Same thing you have to do in question number 6 also. So start doing question 6 all of you. Question 7 is your homework. 7 homework है आपका. Okay. 6th करिए. Sir, can I show the triangle? हाँ, yes please. Sir, please see. Just a minute. Very good, very good, very good, very good. Perfect. अरे एक मिनट दिखाओ बेटा, दिखाओ. दिखाइए नैतिक. ये बेटा ये जो बनाया आपने एंगल ए जो बनाया है, इसमें ये आर्क देखो बेटा, ये ऐसे करके यहाँ पे टच होता है. ये वाला, ये इस वाली लाइन को टच करेगा, तभी तो आपको ये पॉइंट मिलेगा. फिर तभी तो आप यहाँ से आर्क कट करोगे. ये आर्क आपने हैंड से बना दिए, प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया आपने. So, sir, we have to take the compass to this point. From this point, we have to make the arc first. आप मेरा आर्क देखिए मैंने कैसे बनाया. ये बड़ा सा आर्क बनेगा. इट विल टच दिस लाइन. इस लाइन को टच Okay, करेगा. sir. Okay, तभी sir. तो ये पॉइंट आपको Sir, मिलेगा. can I show you triangle? तो कंपास को आपको इस पॉइंट पे रखना है एंड ऐसे करके आर्क कट करना है. ओके. Okay, sir. Okay. हाँ जी ध्रुव भुजवानी, क्या कह रहे हो? Sir, can I show you? हाँ प्लीज प्लीज प्लीज. वेरी गुड.
बेटा वही वो सही लग रहा है, दिखाओ जरा, थोड़ा सा पास करो इसको। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 3.85 ठीक है बहुत बढ़िया। चलिए बढ़िया, थोड़ा सा मुझे बस ज्वाइनिंग करने में थोड़ा गड़बड़ लग रही है, बट अदरवाइज इट इज ग्रेट। Okay, so now question number 6. Do it all of you on your own. Start doing. बिल्कुल same है, exactly same. Question 6 is exactly same as question 5. Question 7 is also same. So 7th is your homework. 6th वाला आपको भी करना है. Do it all of you.